हेलो। कैसे हैं आप सब? दिस इज दीक्षा सिंह फ्रॉम बीकॉम डिपार्टमेंट IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, and today I will be taking video lecture on the topic of introduction of management. So let's just start it. As I said, we will be talking about management. तो जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आया वो क्या आया कि what is management? हम management से क्या समझते हैं? As the definition is be displayed on your YouTube, कि management can be defined as the process of administering and controlling the affairs of the organization, irrespective of its nature, type, structure, and size. It is an act of creating and maintaining such a business environment wherein the members of the organization can work together and achieve business objectives effectively and efficiently. देखिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, every organization works in a proper management. We need to manage the things. Either it's your finance, either it's your marketing, either it's your HR. Everything needs to be managed. Everything needs to be administered and controlled. There should be properly management of everything. आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट करते हैं. You manage your things when you're planning to go to your college. You manage your day, you manage your work. What will you be doing? Which lecture you will be attending? What are your plans for today? Anybody, everyone, knowingly, unknowingly, is managing their lives, is managing something in every day. So management is everywhere. Okay. And for every organization to help people to work together to achieve the work objective, business objective, either business objective or their personal objectives, management is helpful. So from this definition, we can come to the things ki, according to this, what will be the nature of the management? As it is said that it is a universal process. Like just before few minutes, I said everybody knowingly, unknowingly is managing everything. Management is all over the world. A simple person living his life, a businessman, boss of the company, head of the department, everybody is doing management. Okay. The next nature says it's goal oriented. Obviously, we are doing something, we have some goals to achieve. I have a target to achieve, I will be managing the things, I will be making the planning according to that. अगर मेरा ये गोल है कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है तो आई विल मैनेज दी थिंग्स अकॉर्डिंगली कि ठीक है मुझे इतना देर लगता है पढ़ने में, मैं इतना देर पढ़ूं तो ये टॉपिक खत्म होगा. दिस इज काइंड ऑफ मैनेजमेंट. ओके, आई विल टेक आउट दिस टाइम. Okay, I can study in the night. I'm a night person. I am a day person. Same goes with the management. No management works without any goal. आपका गोल ही नहीं है तो आप मैनेज क्या कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं. यू आर वर्किंग बिकॉज यू हैव अ गोल टू अचीव. Every organization, every management has a goal which is to be achieved. Planning is done, organizing, everything is done to achieve that goal. So management is obviously and always your goal oriented thing. Then it says process. It's a series of things. It's a proper process which is to be followed. आप ये नहीं बोल ये काम कर दिया अब इसके बाद कुछ नहीं. There are proper process. There are things to be done. There are steps to be followed. So it's a process. It's dynamic in nature. It's keep on changing. आज आपको ये चीज करनी है, इसको मैनेज करने का तरीका दूसरा होगा. कल कुछ और करना है, उसको मैनेज करने का तरीका दूसरा होगा. If there is a proper process and guidelines जो फाइनेंस वाले फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है, इट विल नॉट बी नेसेसरी कि वो सेम चीजें, सेम पैटर्न, सेम प्रोसेस, सेम मैनेजमेंट का तरीका आपके एचआर वाले फॉलो कर रहे होंगे. देयर वर्क इज डिफरेंट. एचआर इज प्योरली डीलिंग विद योर ह्यूमन रिसोर्स. उनका काम करने का, उनका मैनेज करने का चीज दूसरा होगा. जो बंदा फाइनेंस में डील कर रहा होगा उसका तरीका
दूसरा होगा. सो इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर एंड इट्स इंटेंजिबल. आप इन चीजों को फील नहीं कर सकते. दे आर इंटेंजिबल, दे आर वर्किंग एंड दे आर इन योर डेली लाइफ. ओके. उसके बाद देर आर 5 functions ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. The very first function is planning. Planning is future oriented. Planning seeks to bridge the between where you are and where you want to go. आपको कुछ भी करना है, you need to do planning. आपको मार्केट सब्जी लेने भी जाना है, यू डू अ प्लानिंग फॉर दैट. ओके, आई विल बी गोइंग एट दिस टाइम, आई विल बी डूइंग इन दिस वे, आई विल बी गोइंग फ्रॉम अ बाइक, आई विल बी गोइंग बाय वॉकिंग और anything. If you have to go to attend an event, you have to plan for it. Nothing is done without planning. Same goes with the management. No management can work without proper. अगर प्लानिंग ही नहीं होगी, हमको पता ही नहीं होगा कि हम किधर जाने का है, हमको क्या एक्शंस लेने का है काम करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? हम कैसे अपनी मैनेजमेंट में अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस देंगे, उनको कैसे बताएंगे कि काम कैसे करना है? फिर तो सब अपने मालिक है, जिसका जो मन करेगा वो कुछ भी करेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है. So planning is future oriented and determines an organization direction. हमने क्या बोला? Planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. हमने जब प्लान बनाया हम कहीं और होंगे, जब हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो जो हम जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे वो एक अलग पॉइंट होगा. ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन. इसमें एक सिस्टमैटिक वे होता है, स्टेप्स होंगे, स्ट्रैटेजीज बनेंगी जिनको हमें फॉलो करना होगा. ठीक है. कि हम आज अगर प्लानिंग है कि आज से ये काम करना है, हमें 10 दिन में ये टारगेट अचीव करना है, तो विल मेक प्लान्स अकॉर्डिंग टू दोस 10 डेज कि हाँ, इन 10 दिनों में हमें ये काम खत्म करना है. सो प्लान विल बी मेड अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग से हम क्या समझते हैं? चीजों को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना कि किस तरीके से काम कर सकते हैं. ठीक है. जब हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, देयर कम्स अबाउट द अथॉरिटी रिलेशनशिप and responsibility relationship. We have to manage our organization, we have to manage our people, our workforce कि हम लोग ढंग से सबकी मेहनत के साथ, सबके साथ मिलके काम कर सकें. Function of organizing involves determination of activities that need to be done in order to reach the common goals, assigning these activities to proper personnel and delegation and delegating the necessary authority to carry out activities. हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके हेड्स होंगे. दे विल प्रॉपरली डेलीगेट द ड्यूटीज. Higher authority will delegate their authorities to the heads of the departments and they will coordinate with their subordinates कि कौन सा काम कैसे करना है ताकि चीजें ढंग से ऑर्गेनाइज हो और हमारा काम अच्छे से हो सके. थिंग्स आर डन इन प्रॉपर वे एंड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉपरली काम हो सके. मैनेजमेंट वर्क्स इन प्रॉपर एंड मैनर. Sorry. Staffing. Staffing leads to arrangement of your labor force, your HR, your human resource. Staffing is the function of hiring and retaining a suitable workforce for the enterprise, both at managerial as well as non-managerial level. It involves the process of recruiting, training, developing, compensating, and evaluating employees and maintaining this workforce with proper incentives and motivations. अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज मैंने एम्प्लॉयज हायर कर लिए, उनसे ढंग से काम लिया नहीं, उनको प्रॉपर जो एज अ एचआर ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करने के लिए जो भी प्रॉपर हमें
लोगों को फैसिलिटीज देनी होती वो हमने दी नहीं। आज मैंने एक बंदा हायर किया, 10 दिन बाद वो छोड़ के चला गया, अब 10 दिन बाद फिर से नए बंदे हायर विद, इज इट फिजिबल? नो। योर अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड एफर्ट, नीड टाइम, नीड मनी। अगर आप अपने स्टाफ को ढंग से हायर नहीं कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यू हैव योर वेरी गुड गोल्स, यू हैव योर बिग मिशंस टू, बट यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद योर वर्कफोर्स, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। स्टाफिंग सब यहीं पे नहीं रुक गया कि हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया, सिलेक्शन किया, छोड़ दिया। इट इज क्लियरली मेंशन कि इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग। हमने रिक्रूट किया, हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उन्हें डेवलप करेंगे, हम टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को इवेल्युएट करेंगे कि वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली or not. It's not the sole responsibility of organization to provide good benefits and good services and facilities to the employees. Vice versa, employees are also responsible कि अगर उन्होंने कोई organization join किया है, they keep the organizational goal in their view, वो उसको ध्यान में रखते हुए काम करें, प्रॉपरली काम करें, ताकि organizational goal इग्नोर ना हो। If we are in an organization, we have to be loyal to our organization. We should be 100% loyal to our work. हमें वर्क करना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स रोबोट, बट इट कैन नेवर बी सिचुएशन वेयर वी एक्सपेक्ट और अज्यूम कि वी विल बी नीडिंग a single percent of workforce. We will be needing. We will be needing workforce in terms of technical, in terms of non-technical workforce. So in our management, staffing is a process जिसमें हम लेवल अरेंज करेंगे, वर्कफोर्स को अरेंज करेंगे। We need workforce at every level. We need our human resource at every level. We need a proper human resource as the level requires कि अगर टॉप लेवल पे चाहिए तो उसका कैसा रोल होगा, उसके क्या वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है। देन मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। So staffing is one of the functions of management where we are responsible for our arrangement of workforce. Directing. Directing function is concerned with leadership, communication, management and supervision. हमने human resource को hire कर लिया, क्या हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, मैंने अभी भी बोला कि हमने human force को hire किया, but they need proper supervision. We need to communicate as a management, as a organization. हमने हायर कर लिया, लेकिन हमने उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, हमने उनसे बात नहीं की। एज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, there is zero communication between the superior subordinate. Is it possible that organization works in a very good manner? No, it's not possible. It's not possible at all. To maintain the superior subordinate relationship, for the effective working of any organization and management, for the achievement of the goals of the management, there needs to be a proper communication. हम क्या चाहते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे, हमारी एम्प्लॉयज हमारे वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें बताएंगे। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी एक लीडर में होना बहुत जरूरी है। द पर्सन हु विल बी हेडिंग द होल डिपार्टमेंट, हु विल बी हेडिंग द होल level, suppose a top level of management level, or he's heading a department like finance department or human resource department or say sales department, research and development department. So that one person should have the leadership quality कि वो इंसान को लीड कर पा रहा है, वो उन लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। देयर इज अ प्रॉपर कि ठीक है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम बता दिया गया, कम्युनिकेट कर दिया गया, अब उसको देखना भी तो पड़ेगा ना कि काम वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर सुपरविजन, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से काम करें, एफिशिएंट वे में काम करें, सो दैट वी कैन अचीव
our organizational goal, our management goals, and at the same time, employees are able to achieve their own personal goals. ठीक है? उसके बाद लास्ट होता है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हम चीजों को प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हैं। हमने पहले से स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, कुछ प्लान्स बना रखे हैं, कुछ गोल्स बना रखे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस उस तरीके से हो रही है कि हम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, इफ देयर इज एनी डेविएशन, then surely there is a requirement to take some corrective actions so that हम लोग उस डेविएशन को करेक्ट कर सके। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मैनेजमेंट है, 90% पीपल आर वर्किंग, बट देयर मस्ट बी 10% पीपल जो शायद काम ढंग से नहीं कर रहे होंगे, या देयर मे बी सिचुएशन अराइजेस जिसकी वजह से आप लोग अपने मैनेजरियल गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा हो गया, तो उसे बिना जाने रह सकते नहीं। हमें जानना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। आफ्टर अचीवमेंट ऑफ अ गोल वी नीड टू चेक कि हमने क्या सोचा था, क्या हम वहां पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। अगर नहीं पहुंचे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, हम लोग चीजों को चेक करेंगे, हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, और इस तरीके से हम कंट्रोलिंग करेंगे। हमने मैनेजमेंट की बात करी, ठीक है, हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात कर ली। हमारे 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक लास्ट बात हम लोग कर लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैंने बताया कोई भी मैनेजमेंट होता है उसमें हमेशा लेवल्स होंगे। देयर इज अ टॉप लेवल, there is a middle level, and there is a lower level. Top level, top management are the people who are responsible, जो सारे decisions लेते हैं कि how the organization will be working. Then we have the middle level where there are superiors who somewhere act as a communication guard between your top level and the lower level. और आपके जितने भी काम है, काम को करने का डिसीजन, वो लोग गोल्स बता दिए गए टॉप लेवल के थ्रू कि भैया ये सब करना है। मिडिल लेवल विल प्लान अकॉर्डिंगली कि ठीक है, इन गोल्स को अचीव करने के लिए दीज थिंग्स आर टू बी डन, एंड लोअर लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग, दे विल बी डूइंग द वर्क दे आर सपोज्ड टू डू। Okay, and lower level is somehow the persons who will be dealing with, if that is a manufacturing industry, there is a production industry, so the people who are at the lower level management, they are responsible to deal with machinery, who are responsible for the manufacturing and the production work. Okay, so with this I sum up with the introduction or basics of management. I hope you people like the lecture, and thank you for today.